Bari. In this video, I'm going to discuss various laws of mechanics, various important law of mechanics and derived law of mechanics, and review concepts also we can say like that. So Newton's first law and second law, third law of mechanics, then Newton's law of gravitation, law of transmissibility of forces, parallelogram law of forces, and some more law I'm also going to discuss, like triangle law of forces and then polygon law of forces, we'll see later. So we already know the Newton's first law, second law, third law are very common, and I think we all of us know uh, okay, about these law, but I'll just quick revise. I'm going to revise quickly. तो सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by any by an external agency acting on it. करेक्ट. तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर स्टेबल है तो स्टेबल रहेगी until unless it get disturbed, okay, by an external agency. Okay. So second law generally it states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the impressed force, or we can also define force is equal to mass and acceleration in that way. And okay, so impressed force, and it takes place in the direction of force acting on it. So it is the force is directly proportional to rate of change of momentum, but momentum is equal to mass and velocity. So force is equal to m is common, m v1 minus v2. So okay, change, this is the force, mass and rate of change of velocity, and then force is equal to mass and acceleration, then m into a. Correct. So rate of change of velocity is known as acceleration. So we can write like this: force applied is equal to, so we may write like this: force is equal to mass and acceleration. So 1 किलोग्राम मास, इफ अगर किसी बॉडी पे 1 किलोग्राम का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से लगेगा तो उसका फोर्स 1 न्यूटन होगा. यही यूनिट भी है फोर्स की इन एसआई system. And third law of force is like this: Newton's third law, it states that for every action there is an equal and opposite reaction. तो कोई भी बॉडी है, ये रेस्ट में है और पड़ी हुई है किसी ग्राउंड पे, तो ये बॉडी बराबर रिएक्शन दे रही है जितना कि उस पर फोर्स लग रहा है फ्लोर पे. करेक्ट. सो लाइक दैट. और जितना इस बॉल का वेट है उतना ही फ्लोर से इस पर रिएक्शन भी आ रहा है. आई कैन से लाइक दिस. सो एंड दिस इज देयर इज ए स्टेयर इज सपोर्टेड बाई बॉल एंड फ्लोर. सो अगेन you can see the reactions on the wall and the reaction on the floor. So like this. So Newton's law of gravitation is also important to see. What is that Newton's law of gravitation? Every body attracts the other body. Okay, the force of attraction between the bodies of mass m1 and m2. Okay, there are two bodies like m1 and m2, and distance between these two bodies is d. And okay, so they are pulling to each other. So m1 m2 at a distance d as shown in figure. So force applied, pulling force between these two bodies is known as g m1 m2 d square. G is a gravitational constant. Okay, the constant of proportionality and is known as constant of gravitation. I think we all already studied about that. Now come to the law of transmissibility of forces. That is very important and very important. According to this law, the state of rest or motion of a rigid body is unaltered if a force acting on the body is replaced by another force of same magnitude and direction, but acting anywhere on the body along the line of action of replaced force. Okay, अगर सपोज ये कोई बॉडी में लेता हूँ, इस पर यहाँ से मैंने फोर्स लगाया और इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है यहाँ से ये पास हो रही है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं यहीं पे यहाँ से पास कराऊँ और यहाँ से मैं ये दूसरा पुल फोर्स लगा दूँ, पुश फोर्स से पुल फोर्स यहाँ से लगा दूँ, जो जितना इफेक्ट ये वाला फोर्स देगा उतना ही इफेक्ट ये वाला भी फोर्स दे रहा होगा. तो मैं इस वाले फोर्स को हटा के चाहे ये वाला फोर्स दिखा दूँ बॉडी पे, तो दोनों का मतलब सेम है.
ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है और डायरेक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। करेक्ट। सो दिस इज द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, दिस इज माई मर्सिडीज, so whether I am pushing it from back with my hands, or I pull it from front, the effect will remain same for both, in both cases, if the line of action passing from, okay. Now parallelogram, law of forces, that is also very important। ठीक है, इसको मैं ब्रीफ करूँगा। It enables us to determine the single force called resultant which can replace by two forces acting at a point, ठीक है, with the same effect as that of the two forces। तो दो फोर्सेज अगर मैं किसी बॉडी पे, ये कोई बॉडी है, उस पर इस तरीके से लगा दूं, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ से भी खींच रहा हूँ, यहाँ से भी खींच रहा हूँ, तो ना बॉडी इधर जाएगी ना इधर जाएगी, पूरी की पूरी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो मैं इन दोनों को हटा के इसी डायरेक्शन में अगर कोई ऐसा फोर्स लगा दूँ जिसकी वैल्यू आर हो, तो वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेज का, और उसका इतना ही इफेक्ट होना चाहिए जितना कि इन दोनों फोर्सेज का है। सो दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। Though Stevens employed it in 1586, oh it's too old। So what does it states? Okay, if two forces acting simultaneously on a body it at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection of the two sides representing the forces। तो कहने का बहुत सीधा सा मतलब है, अगर कोई बॉडी है जिस पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम लोग दो साइड पैरेललोग्राम की बना के उन पे उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि ये दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम की दो साइड्स हो जाए, और जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, दैट वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। लाइक हमने ये पैरेललोग्राम बनाए, दोनों फोर्स हो गए और ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया, और इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायगोनल ऑफ दैट parallelogram। So this is the parallelogram law of forces। Now I would discuss, I am not going to drive here the derivation of, very simple derivation of parallelogram, but some important laws I will show you। The triangle law of forces, that is also very important, may be stated as if two forces acting on a body are represented one after another by the sides of a triangle, their resultant is represented by the closing side of the triangle taken from first point to the last point। अगर ये दो फोर्सेज हैं, इन दो फोर्सेस को मैं इस तरीके से दिखाऊं कि ये पहला फोर्स हुआ, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट फोर्स, लाइक पहले ऐसे थे, ये बॉडी थी और ये दूसरा फोर्स था। सो दिस इज़ F1 and this is F2। now I arrange these forces like this is the head and this is tail, and second force I rearrange like this, then I join first and last point, and joining these two points will give me the resultant of these forces। so this is a triangle law of forces, okay। so all these forces are the sides of triangle, and third resultant is also a side of a triangle। now the polygon law of force is also a important law। it is nothing but that it is the repetitively use of the triangle law of forces। so what does it explain? so it may be stated as if the number of concurrent forces acting simultaneously on a body are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in a order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken from first point to the last point। करेक्ट। तो बिल्कुल सेम है तरीका, आपको अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लाइक दिस। so like these are the forces acting at this point। so I want to know the resultant of these forces using polygon law of forces। तो सबसे पहले पहला लॉ, पहला फोर्स प्लॉट किया, दिस इज द फर्स्ट फोर्स
and suppose angle of these forces theta 1, theta 2, theta 3, okay, theta 2, theta 3, theta 4, like this. These are the four forces and angles. तो पहला फोर्स बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड थीटा 2 किया, और इसके लिए हम लोगों ने थीटा 3 किया, और इसके लिए थीटा 4 किया, ये चारों बनाए. तो सबसे पहले हम लोगों को जो रिजल्टेंट ये मिलेगा, दिस विल बी R1 एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस. So now this is the resultant force, and this force will give the resultant of these two forces. Now this is the force for us for the resultant of this R2. ये R2 जो है resultant है, वो इस resultant और इस force का resultant है R2, और R3 जो resultant है वो R2 एंड F4 फोर्स जो हमने प्लॉट किया है उसका रिजल्टेंट है क्या, R3. तो अल्टीमेटली R3 जो रिजल्टेंट है वो सारा फोर्सेज जो इस बॉडी पे लग रहा है उसका रिजल्टेंट है R3. तो इस तरीके से आता है. तो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से प्लॉट करते हैं, सबसे पहले पहला फोर्स बनाएंगे हम लोग, जो ये फोर्स लग रहा है उसी के पैरेलल होगा. सपोज अगर ये ऐसा लग रहा है तो मैं ब्रीफ में बनाऊँ यहाँ पे, तो ये एक फोर्स हुआ, दूसरा फोर्स यहाँ से लगेगा, तीसरा फोर्स और यहाँ से लगेगा, चौथा फोर्स यहाँ से लगेगा. तो इनका जो रिजल्टेंट ये वाला जो फोर्स आएगा ये रिजल्टेंट होगा R. इन सब का ओरिएंटेशन हम लोग निकालते जाएंगे. अगर ये फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो इसका थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये, और दूसरा फोर्स है उसका थीटा 2 हो जाएगा, तीसरा फोर्स है उसका थीटा 3 हो जाएगा, एंड ये थीटा 4 हो जाएगा. तो सारे फोर्सेस का हम एंगल कैलकुलेट करके उनको बनाएंगे और हमें फाइनली जो है रिजल्टेंट मिल जाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस लाइक दिस. Okay, now I am going to show you the parallelogram derivation of parallelogram law of forces. Very simple derivation. I just it will take around 3 minutes to complete this derivation. Okay, so now let us assume these two forces on subjected on a body. Okay, so this is the body, small body, and these subjected to two forces at an angle theta. So now I plot the parallelogram by extending these lines like B, C and D, C. Okay, and the intersection of these lines is at C. So I mentioned A, B, C, D, and join these 2 points, and let us assume this is a resultant R. So what I did, I drop a perpendicular from here to here and extended line AB, and intersection is represented like E, sorry. So, okay, so as we know R is equal to AC. Let us assume that R is the resultant, so R is equal to root of from Pythagoras AE square plus AC square, okay, is equal to AC. This AC is equal to, this is a triangle, this is a right angle triangle, so you can see like ACE is a right angle, and now AE is equal to AB plus BE square plus C square. So we know that the AB is equal to F1 and AD is equal to F2. Cos theta is equal to BE over BC. Okay, cos theta, so this is the cos theta BE base over hypotenuse, and okay, and sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, so this is perpendicular C and over BC. So from here we can write B is equal to F2 cos theta and C is equal to F2 sin theta. So I can show you the R is equal to F1 square finally, then F2 square F2 cos theta whole square of F1, and F2 cos theta, then F2 square sin 2 square theta. Okay, so R is equal to F1 square plus 2 F1 F2 cos theta, opening the bracket, then F2 square cos square theta, F2 square sin square theta. cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, F2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. So from trigonometry, so R is equal to F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. This is the important law of parallelogram, the final derivation. Let us assume the inclination of the resultant to the direction of force F1 is given by alpha. Alpha is the inclination now. Now this is the inclination alpha of the resultant. So resultant, so tan theta, what it would be, so this is the tan theta is equal to perpendicular over base, so this is CE over AE. So C is equal to F2 sin theta,
So we can write here like this. So CE, okay, F2 sine theta, then AE is equal to F1. So this is, you see, F1, and BE is equal to F2 cos theta. So alpha is equal to tan inverse. This is the relation, and some special cases are also there, you can remember or not remember, no problem. So R is equal to F1 square plus F2 square if theta is equal to 90 degree. So cos 90 is equal to 0, then R is equal to root of F1 square plus F2 square. Now if theta is equal to 0 degree, R is equal to F1 plus F2, and if theta is equal to 180 degree, so R is equal to F1 minus F2. It's so simple as, okay. So I thank you all for watching this video, and keep me watching, and thanks a lot for motivating.